Hello guys, welcome to Vikrant Tech, and today we have AlphaPax DG1 plus miner, which is a 14 gigahash miner. This miner works on script algorithm and it can mine Dogecoin, Litecoin and other cryptocurrency which works on script algorithm. So guys, as you can see, this is the left profile of the miner and this is the front profile of the miner, where we have the two fans on the front side, and this is the power supply which is installed on this machine. Here are the power sockets for this machine, and this power supply have three fans. On the front side we have the Ethernet port, fault light, normal light, IP report button and reset button, and TF card function if the control board for the machine is crashed out. So guys, as you can see, this is the front fans. I will put all the dimensions of this miner into the description box below. The power consumption is 3900 watt and the hash rate is 14 gigahash. Guys, as you can see, this is the back profile of the miner, where we have two fans which will throw the hot air out, and this is the power supply from where the hot air will come out from the power supply as well. So guys, make sure when you are running the machine, make sure that hot air of the miner is going directly outside the room and the room is properly cross ventilated. Cross ventilation is very important when you are running these ASIC mining machines. However, some people think that running the machine without cross ventilation will work fine, but it is not true. So guys, now we will do the cable setup on this machine. First of all, we will connect the Ethernet cable. The other end of this cable is connected in my Wi-Fi router. Now I will connect the power cord on this miner. Here are the interface of the power cable. The other end of these power cables are directly connected in my MCB. Here, this is a 63 ampere MCB. This MCB can run up to 3 machines very easily. So guys, before turning on the miner, I'll tell you some of the details. So in order to start mining, first of all, you need a stable voltage to 20 volt in order to run this machine, because this machine works on single phase. Apart from that, you need to create an account on your pool. Either it can be F2 pool, Binance pool or any other pool which are available out there. Apart from that, you need a Bitcoin wallet address. So you need a Litecoin or Dogecoin wallet address where you can deposit your mined coins. However, if you will run your machine on NiceHash will automatically convert your Litecoin and Dogecoins and make you payment in the BTC. So guys, if you use NiceHash pool on this machine, you have to get your KYC done on NiceHash, and you can directly mine Bitcoin on NiceHash using this miner. For the time being, I will configure this miner on F2 pool. So guys, let's go to the computer screen and let's find the IP of the miner. In order to find the IP of the miner, we need to use apps like network scanner or Fing network tool, or if you are using on desktop or laptop, you can use advanced IP scanner in order to find the IP of the machine. Guys, now I have turned on the machine. Let's go to the computer screen. Guys, as you can see, I have already created an account in F2 pool. From here on, I need to go to the settings options and then click on LTC, and here are the mining URL which I need to enter into the machine to start mining on script algorithm. So guys, you can use this software on desktop, advanced IP scanner, in order to find the IP. So once we click on scan, we have got the new IP 192.168.0.183. I'll enter the same in the Google Chrome browser. So guys, when I enter the IP in the Google Chrome, it has asked for the username and password. The default username and password for the AlphaPax machines are root. So guys, once we click on root, we are on the console page of AlphaPax DG1 plus. So guys, as you can see, there are 4 hash boards on this machine. Each hash board consists of 204 chips. So now we need to go to the miners and then configure the miner on the desired pool. So we have already created an account on F2 pool. Now we will configure the mining URL here and the sub account name as well. So guys, we have entered the pool settings here. There are the mining URL, and this is my username on F2 pool, Vikrant Tech, and .dg1 is our worker, and the password is 123. And from here on, we will click on save and apply, and it is showing success. So now we need to go to the dashboard and wait for few minutes so that the pool data can be updated here and miner can be connected on the pool. Right now it's showing network abnormal, which is very, very normal right now, because the miner is not being connected to the pool. So the miner is booting right now. So let's wait for 5 minutes, and once all the data is updated here, I will explain you the dashboard one by one. So guys, it has been few minutes. Under the log we have some of the information. The hashboard is under heating, so this is very good on the mining machine. So the machine does not reach the complete hash rate immediately. It takes few minutes to heat up the hashboard and then reach the maximum hash rate. So let's wait.
Let's wait for 10 minutes, and once the data is updated, I will explain you full dashboard. Guys, if you want to purchase the spare parts for these machines, all are available with us. Even the power supply and hardware wallets are also available. You can contact us if you want to purchase any of the spare parts. You can contact us via our website and we will try to get back to you as soon as possible. Guys, as you can see, everything is showing normal, network, rate, fans and temperature, but still the hash rate is not been updated here. We still have to wait for few minutes. So guys, as you can see on the lower side, there are 4 hashboards on this machine. Each hashboard consists of 204 ASIC chips, and the frequency is automatically adjusted by the control board of the machine. So here are the temperature of the machine, which are normal. These are the 4 serial number of all 4 hashboard which are inside the machine. So guys, the second temperature, this is the outlet temperature and this is the inlet temperature. The outlet temperature should be less than 85 in long run for this machine. On the lower side there are 4 fans, for which the fan speed is automatically adjusted by the control board of the machine. So guys, the miner has been working from past 1 minute. Still the hash rate has not been updated here. We have to wait for some time. So guys, as you can see, the machine has already reached 14,000 MHz, which is 14 gigahash, and all 4 hashboards are working perfectly fine on this machine. This is the theoretical number which needs to be achieved, and this is the real-time hash rate of each hashboard. So guys, as you can see, the miner is working perfectly fine. Guys, I have given a link in the description box below if you want to check the latest profit on this machine, because the profit for these mining machines keeps on changing as per the coin price and the network changes. So it is not possible for us to update the data on daily basis. So I have given a link into the description box below. You can click on that link and check the profit of this machine, the latest profit. Left hand side we have dashboard. This is the miner where we need to configure the miner on the mining URL on F2 pool. From here on we can update the firmware of the machine. From the password we can change the current password, which is root. We can enter some new password here. This is for server testing, and this is the current log of the miner, which shows all 4 hashboards are working perfectly fine and the miner is working perfectly. So guys, right now the miner is currently working on 13,978 gigahash. Once the miner is running for past 20 minutes or 15 minutes, it will reach the complete hash rate of 14 gigahash. So guys, thank you very much for watching this video. So guys, from here on I will continue the Hindi version of this video. गाइज़ वेलकम टू विक्रांत टेक। और आज हमारे पास अल्फा पैक्स का DG1 प्लस माइनर है जो 14 गीगा हैश की मशीन है, जो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे काम करता है। लाइटकॉइन और डॉज कॉइन की ये मशीन जो है माइनिंग करती है। ये 14 गीगा हैश का माइनर है। पावर कंजम्पशन जो है इसका 3900 वाट का है। ये हमारी जो है इसकी राइट साइड में पावर सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई के 3 फ़ैन है और ये हमारी पावर सप्लाई की इस पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी जो है पावर कॉर्ड कनेक्टेड है माइनर के अंदर। पावर कॉर्ड का हमारा कोई इंटरफेस देखने के लिए कुछ ऐसा लगेगा। ये हमारी पावर सप्लाई के जो है इंटरफेस है और यहाँ पे हमने जो है अपनी लैन केबल इसके अंदर कनेक्ट की हुई है। गाइस इस मशीन का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। लाइटकॉइन और डॉज कॉइन का प्राइस भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। गाइस इस माइनर की जो जो डायमेंशन डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हमारे फ्रंट फैंस है जो नॉर्मल हमारे लगते हैं, जैसे पहले हैंड माइनर वाली मशीन्स में लगते थे। गाइज़ ये हमारी पावर सप्लाई है और पीछे के बैक फ़ैन है। गाइज़ इन पावर केबल का जो अदर एंड है वो डायरेक्टली मेरी MCB में कनेक्टेड है 63 एम्पियर की में, और इससे जो है मैं अपनी 2-3 मशीनें चला सकता हूँ। इस मशीन का मंथली जो यूनिट कंजम्पशन रहेगा वो लगभग 2500-2700 यूनिट के आसपास आना चाहिए। और जो इसका टोटल जनरेशन चल रहा है अभी नवंबर में वो लगभग 1 लाख रुपये के प्लस ही चल रहा है, 1-1.5 लाख रुपये के आसपास। गाइज़ इस मशीन को चलाने के लिए आपको जो है स्टेबल 220 वोल्टेज चाहिए। आपको पूल पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, F2 पूल या बाइनेंस पूल या किसी भी और पूल पे या फिर नाइस हैश पे। उसके बाद आपको जो है वॉलेट एड्रेस चाहिए। वॉलेट एड्रेस पे जहाँ पे आपके कॉइन्स डायरेक्टली जो है माइन होके जो है डिपॉजिट हो सकें। और आपको जो है क्रॉस वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मशीन रूम के बीच में रख के चला देंगे, AC ऑन कर देंगे तो हम अपनी मशीन को ठंडा रख सकते हैं। वैसे गाइज आपकी मशीन लॉन्ग टर्म में चलेगी नहीं, वो ख़राब हो जाएगी। तो आप मेक श्योर करो कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन रहे प्रॉपरली, मशीन से जो है गर्म हवा जो है कमरे से डायरेक्टली बाहर निकले।
यदि आप मशीन विक्रांत टेक में परचेज़ करते हो तो हम आपको इसका पूरा टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल सेटअप जो है हर चीज़ आपको जो है करवा के, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ चीज़ें करवा के देंगे। पूरा ब्लूप्रिंट देंगे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का, कैसे कैसे होनी है, कितने mm की तार कहाँ पे लगेगी। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मशीन हमारे ऑफिस से डिस्पैच होगी आपके एड्रेस के लिए, वो आपके अकाउंट पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होगी, ताकि डायरेक्टली आपको जब मशीन मिले तो आप प्लग एंड प्ले कर सको विदाउट कोई टाइम वेस्टिंग के। गाइज़ अब इसके बाद जो है मशीन का ये हमारा केबल सेटअप होने के बाद जो है हमें अपनी मशीन को इसकी आईपी पता करनी है। आईपी पता करने के लिए जो है हम एडवांस आईपी स्कैनर का यूज़ करेंगे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, या फिर प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स हैं एडवांस आईपी स्कैनर या फिंग नेटवर्क टूल के नाम से बहुत सारी ऐप है आईपी सर्च करने के लिए। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इसकी आईपी पता कर सकते हो। आईपी पता होने के बाद जो है आप अपना पूल पे अकाउंट क्रिएट करके रखें, अपनी जो है माइनिंग यूआरएल उसके अंदर डाल दें। माइनिंग यूआरएल डालने के बाद जो है आपकी माइनिंग मशीन जो है जैसे ही आप सेव एंड अप्लाई करोगे तो 10 मिनट के अंदर जो है माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आपके कॉइन्स जो है एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे पूल के अंदर। गाइज़ ये सॉफ्टवेयर है एडवांस आईपी स्कैनर आईपी पता करने के लिए। ये माइनर की मैंने आईपी पता कर लिया और ऑलरेडी इसको जो है अपने F2 पूल के जो माइनिंग यूआरएल है उसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया। यूज़र नेम में मेरा विक्रांत टेक यूज़र नेम है, F2 पूल के ऊपर .DG1 इसलिए लगाया क्योंकि ये DG1 मशीन है। आप डॉट के बाद कोई भी वर्कर नेम दे सकते हो। ये मशीन जो है लगभग पिछले 5 मिनट मैंने चलाई और लगभग 14 गीगा हैश की मशीन है। 13,500 मेगा हैश दिखा रही है, तो लगभग 13.5 मेगा हैश के आसपास ये जो है गीगा हैश के आसपास इसका हैश रेट गया है। लेकिन जैसे ही मशीन को चलते हुए 15-20 मिनट हो जाएगी तो वो कंप्लीट हैश रेट को अचीव कर लेगी। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मशीन के अंदर जो है 4 हैशबोर्ड दिए हुए हैं। हर हैशबोर्ड के ऊपर 204 ASIC चिप्स लगी हुई हैं और माइनर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है कंट्रोल बोर्ड से। ये थ्योरेटिकल नंबर है जो हैशबोर्ड को अचीव करने चाहिए। ये रियल टाइम हैश रेट है। हर हैशबोर्ड पे ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठंडे और गर्म के हिसाब से जो है मशीन उसको अपने आप फ्रीक्वेंसी चेंज करके एडजस्ट करती रहेगी। ये चारों हैशबोर्डों के सीरियल नंबर है। चिप स्टेट नॉर्मल है, मतलब सारी जो चिप्स हैं वो नॉर्मल काम कर रही हैं जो मशीन के ऊपर लगी हुई है। नीचे की साइड में हमारे फ़ैन की स्पीड दी हुई है जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है कंट्रोल बोर्ड से। आपको ध्यान रखना है कि आपकी मशीन के अंदर डस्ट ना जाए, मॉइस्चर ना जाए। गाइज आपको ध्यान रखना है कि आपकी मशीन के अंदर डस्ट ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, उसी से आपकी मशीन ख़राब होती है। वरना तो मशीन जो है आपकी लगभग 3-3.5 साल के आसपास आराम से माइनिंग कर देगी। जो भी कॉइन्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं उनको आप 50% सेल कर सकते हो, 50% होल्ड कर सकते हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी और पर्सनल ड्राइंग्स के लिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट vikrantech.com पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे उसमें। यदि गाइज आपको माइनिंग मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हार्डवेयर वॉलेट चाहिए अपने क्रिप्टो सेव रखने के लिए, कभी भी हैक ना हो, और आपको फैंस वगैरह चाहिए मशीन के लिए तो आप आ सकते हो। तो हमारे पास ये स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं, हम आपको इमीडिएटली डिस्पैच करवा सकते हैं बाय एयर। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ अल्फापैक्स की मशीनों के लिए होते हैं। हमारे पास अल्फापैक्स, वॉट्स माइनर, सब हाइड्रो, एयर कूल सब मशीनों के लिए होते हैं। ये मशीन हमारी सिंगल फेस 220 वोल्ट पे चलती है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अल्फापैक्स DG1 प्लस 14 गीगा हैश का स्क्रिप्ट एल्गोरिदम माइनर, जो कि एक बहुत अच्छी मशीन है। इस मशीन के अंदर एक सबसे बढ़िया बात जो है कंपनी ने जो करके दी है, इनका जो फर्मवेयर है उन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि पहले सारे हैशबोर्ड जो है धीरे धीरे हीट होते हैं और फिर वन बाय वन जो है हैशबोर्ड जो है उसमें हैश रेट देना शुरू करते हैं मशीन के अंदर। उनके अंदर पावर जानी शुरू होती है। एकदम से सारे बोर्ड ऑन नहीं होते हैं। यदि मशीनों के अंदर सारे बोर्ड एक साथ से ऑन होते हैं तो उसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो फर्मवेयर है वो ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी देखने में। Guys, thank you very much.